Hello people, how is everybody doing? I hope you're all well and staying safe wherever you may be. This is Salim Raza. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी हैं। मेहरबानी कि आप एक बार फिर मेरे चैनल पे आ गए मेरे साथ एक गाना सुनने के लिए। तो इस वक्त जो गाना मैं आपके साथ सुनने लगा हूँ नादिर छेन का गाना है नजरिया नादिर। तो हमने आज सुनना है नज़रिया नादिर। तो नज़रिया नादिर के मुतालिक यहाँ पे क्या लिखा है? पहली बात यह है कि ये गाना 2024 सितंबर में रिलीज़ हुआ, तकरीबन 1.25 साल हो गए। एंड इट सेज हियर दिस इज़ जस्ट माय पर्सपेक्टिव, मज़हब नहीं थोप रहा। सो डायरेक्शन एंड DLP बाय none other than Avas Ahan. Big up Avas, my brother. Lyrics, music, mixing and mastering CHEN. Yeah, jack of all trades. Special thanks to Sheroz Ghori, Sophia Mujahid and Inqalab. Big up Inqalab as well. इसका मैं जो लिंक है इस गाने का डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आपको ये गाना पसंद है तो इस लिंक को ज़रूर फॉलो करना और ओरिजिनल आर्टिस्ट को अपनी सपोर्ट दिखाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। अगर ये चैनल पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब। Completely mad love if you do, no worries if you don't. So people, let's get these headphones on. Listen, so people, Nazriya Nadir by CHEN. Let's get this. Let's go. Okay, there he is. I have to mention that from the initial shots, you've seen other stuff, other music, other songs, other music videos by Avas. He's got his kind of like signature kind of vibe to it, the way, the color grading, everything. I really like it. You kind of like know that it's either Avas or, yeah. People, let's continue. Perspectives. Nazriya. Nazriya. या तो मैं या शहर ये जाहिल सारा मतलब हकीकत का बातिल बता रहा। मेरी माँ से दुश्मन तक को मीठा लगे खारा। जिसने कामयाबी पाली जो जीता लगे हारा। इन्हें खाई कोहे तूर लगे धूल मिट्टी, इन्हें नूर लगे माँ बाप मजहब पे मूत रहे। ना महरम बच्चे थूक सके तवाइफे, इन्हें हूर लगे जानी बीवी का रूप लगे। अल्लाह तक पहुँच इनकी पर सितारे पूज रहे। Damn bro, damn, Allah tak पहुंच इनकी पर सितारे पूज रहे। We've only started, you know, and if this was like a deep dive, this video could be an hour long, 2 hours long, so we're not going to be doing any deep diving, but we will talk about, you know, kind of like summarize it a little bit if we can. So yeah, I won't comment about the music and everything. That's all cool. That's always, you know, works well every time that he does it. So it's mainly when you listen to Nadir, it's mainly it's what he's saying, what he's speaking, what his you know, his lyrics, the message. That's what it's all about. And straight away, a bit of Sharui Wagana. How long has it been? It's been like 44 seconds, bro. And already straight away, I'm listening to it. Man, this guy has an impact, I swear, bro. Seriously, he has an impact every single time. And that is one of the reasons why I rate him so highly. Big up big up Nadir, and we've only just started. Let's run this back. ना महरम बच्चे थूक सके तवाइफे, इन्हें हूर लगे जानी बीवी का रूप लगे। अल्लाह तक पहुँच। Damn, man, जानी बीवी का रूप लगे. Bro, come on. This is going to be one of those, isn't it? I'm going to have to work so hard not to pause the bloody thing. इन्हें हूर लगे जानी बीवी का रूप लगे। अल्लाह तक पहुँच इनकी पर सितारे पूज रहे। तभी दुनिया से कट के रहूं सबके तरीकों से बच के खुश मैं इस छोटे से घर में। That's it. Do your own thing. Stay away. Do your own thing. You know. Seriously, there is so much. Every single step you take in life, I know this, you know, I've probably lived probably a little bit more of life than the majority of my viewers anyway. But no, bro, seriously, every step you take, everywhere you go, there's always something waiting to kind of like take you in a different direction, lead you astray. There's always something waiting. So, you know, you gotta be strong, people, seriously. And then that's where it all comes in, doesn't it? It's, if you have that faith, then the strength just automatically, it's there, isn't it? पूछे किराए का अपना निकम में सब ये रहते सारे डर में लोग क्या कहेंगे इनका मजहब ये मुझे कैसे समझेंगे मिट्टी के मटके हसद
लोग क्या कहेंगे इनका मज़े. I can't get through a freaking couple of lines without stopping this thing. I have to not stop it. So I'm not going to. Well, I'm gonna try. I want to try not to. Let's carry on, man. Seriously, come on, CHEN K, bro. Seriously. रहते सारे डर में लोग क्या कहेंगे इनका मजहब ये मुझे कैसे समझेंगे मिट्टी के मटके हसद अज़ाज़ील की समझ जो नहीं सकते जो सजदे समझ नहीं सके फरिश्तों के जो दारू जिस्म इनका हिस्सों में आंखें भरे कुफर फरेबी किस्तों से सबक ये ढूंढे झूठे किस्सों में फायदा लूटे ये सच्चे रिश्तों से हवस और लालच इनके जिस्मों में शहर छोड़ दे नादिर मुझे मेरी छट्टी हिस्स बोले ये बोले शहर की आबादी कुफर दजल झूठ में रहने की आदि और तुम्हें भूखा ना मर्दों वाली चांद में सूरज की आग लगा दी बेटियां परवरिश में ऐसी माँ की जो समझा नहीं सकी so many realities, not the nicest realities around, but the realities. उतार गैर मर्दों को दे शोहर का खुमार बेटे बाप को माँ की जो समझा नहीं सकी क्या कामयाबी नजरे मर्दों की झुके ना जरा भी कमाना जरूरी भाड़ में गई शादी मिलेगी आजादी तू कपड़े उतार गैर मर्दों को दे शोहर का खुमार बेटे बाप को भी घर गाड़ी का बुखार दफा करे मान तू हैसियत सुधार खा गया जमीर मर्दों का कुफ्फार जमीन मेरी लाश की तरह बदबूदार सारे अस्पताल ये तिजारत दुकान कवानीनों कवायद की रिश्वत खुराक चुप करवाता नहीं हिस्सा जमीर को चाकों पे चाके झूठ पे चुरा खूब रहा हूँ लाखों के छाते पे मारूं मैं टाके गानों में लाके सच अकल खोल रहा हूँ बातों पे बातें दिमागों पे ताले लाशों के नारे मजहब इन पे थोप रहा हूँ जिसको जो करना है करे मरे मेरी तरफ से मैं तो बस यहाँ बोल रहा हूँ क्या बंदूक रखी मैंने सर पे तेरे या आग. Again, sorry, apologies, Mazra, that whatever, that I've stopped it, and damn, just look at that little where I paused it, man, that look on his face, that expression. But anyway, people, yeah, what can I say, man? This is hard hitting as always, as all the stuff that we listen to, Nadir in the past is. बातों पे बातें दिमागों पे ताले लाशों के नारे मजहब इन पे थोप रहा हूँ जिसको जो करना है करे मरे मेरी तरफ से मैं तो बस यहाँ बोल रहा हूँ क्या That's the problem, though, isn't it? I mean, this song is speaking to a broader and much more deeper issue if you kind of look at it in that context. I mean, when you're telling somebody, I mean, you could be saying your piece. I could be saying something about somebody or something that happened. Basically, I could be talking about anything, right? And whatever the norm is regarding what I'm talking about, regardless of the fact that the norm is not the right thing to do. So if I speak out against that or say something against it, it's just my opinion. Yeah, bro, I don't like this, man. This is crap. And then the other person, if they're doing that, then straight away I'm the one who's going to get shit for speaking, for saying that, I disagree with something, or saying that, this is my perspective, this is my view. It's crazy, that is how, people get shot down, people get shut down, people get, just because, like I said before, and I've said it many times before, it's like, it's a mirror. People do not want to look in the mirror. They just don't, on the face of it, yeah, bro, we believe in the righteousness, all the rest of it, and put the mirror up, and no, don't need it. I get what he's saying. I get what Nadir is saying, and unfortunately, the issue is probably with my lack of articulation to be able to explain exactly what I'm. Anyway, let's continue. This is hard hitting, super tune. मैं डाके गानों में लाके सच अकल खोल रहा हूँ बातों पे बातें दिमागों पे ताले लाशों के नारे मजहब इन पे थोप रहा हूँ जिसको जो करना है करे मरे मेरी तरफ से मैं तो बस यहाँ बोल रहा हूँ क्या बंदूक रखी मैंने सर पे तेरे या आ गया क्या मैं घर में तेरे जो मैं बोल रहा हूँ सच्ची तो बोल रहा हूँ कि तेरे दिल को हवस भर भर के तेरे दिमाग को गंदा करके भरते जे बयाना मायूसी ऐसी चर से तेरे तुझे जो जिंदा दिखाई दे मर के रहते पसंदीदा कीड़े. Take those bandages off your eyes, bro. Come on, seriously. जबयाना मायूसी ऐसी चर से तेरे तुझे जो जिंदा दिखाई दे मर के रहते पसंदीदा कीड़े गटर के तेरे लिखारी कलाकारी जो सारे रहते थे मेरी और तेरी तरह ये स्कूल से रोज पढ़ बढ़ के आते फिर खाते रोटी दाल अपनी माँ से मशहूर सा कोई भी दूर पर उठा ले थोड़ा सा तंग वो घर के हालात से तेरे तारों के मासूम में बुरे हालातों से पैदा होती कला ये हालात अपने रैप्स के जरिए बताते और मर्द हम सारे Inqilab, my G, my brother. Inshallah, bro. One day we will, listen to some of your music. And yeah, bro, come. This guy, seriously, keep an eye on him. Trust.
तरह के लड़कों को इनकी रैप में देखे अपनी जिंदगी सुनते इनको दिन रात ये व्यूज पे व्यूज मशहूर इनके गाने रेवेन्यू रैपर्स में लालच जगा दे मशहूरी तहसीब मजहब बुलवा दे देखे तो ये देसी पर कालों को छापे जब दिन मुजरिमों पे करूं हमला मैं they look they see what कालों को छापे so freaking true bro come on man मजहब बुलवा दे देखे तो ये देसी पर कालों को छापे जब दिन मुजरिमों पे करूं हमला मैं तुझे पता भी है कि तू तब तक क्योंकि तू हारे वे लड़कों निकम्मों को हरामखोरों को ब्रांड समझता है मौसीकी में छुपे तू अल्फाजों को सुन तेरा पसंदीदा क्या बकता है फिर तुझे तेरा ये आइडल भी सुअर लगेगा जो हकता है वो ये निकलता है पखाना ये फैंस को खिलाते दिखाते मॉडल नंगी आदि Yeah, okay, I know where exactly what he's talking about and exactly where he's going and yeah, I mean, I don't know what to say, man. I know everything that he's saying. There is truth in it, 100% it is. The thing is, I'm not an artist, so maybe I don't know exactly how. But if something becomes a means of revenue and you realise that, you've come from tough, beginnings and things like that, and then you say, rapping, for example, hip hop, for example, you're a decent artist and you do a certain thing and you get popular, and then it's a basis of revenue, and then you need to do more and more and more. You get more money, whatever, all the rest of it. The thing is, I suppose the trick is knowing where the boundary is, because there's nothing wrong with making money at all, It's just knowing where the boundary is. I do understand what he's saying, and I also understand the other side of the argument where people say, okay, this is what happens. This is, we're telling you as it is. The only issue I have with all of that is, yeah, I understand that, and I listen to all that kind of music. I listen to all the kind of like gangster rap and everything and whatever, and I do listen to music where there are songs, there are scantily clad women, whatever. They're like maybe there's a bit of sexploitation type thing going in the song, the way they're portrayed, or all the bad vices, all the bad things, the bling bling bling, the naked women, the drinking, the alcohol. That's all kind of like shown. Now, for a person like me, I've lived my life. I'm I've got kids. My son's married now, right? So I've been through that. So these kind of things, when I listen to these kind of songs, this kind of music, it doesn't really affect me. I'm not gonna listen to a song or see a music video where somebody's getting drunk or something. I'm not gonna think, what, I'm gonna do that, because I believe I've had that experience of life and I know what I shouldn't be influenced by, and certain things I will not let myself get influenced by. So when I listen to music like that, to me it's nothing. It doesn't do anything. It doesn't influence me. But I 100% see how it can influence the younger generation. Yeah, you see that all the time, and so yeah, when it comes to the younger lot, especially the ones who really at the moment are probably gobbling up the whole scene and all the rest of it, yeah, that's where the problems arise, especially when people start copying their idols and things like that, and then yeah, all the bad shit that they do, that's on you, bro. That's on the person who's kind of like enabled it in a way, even if it was subconsciously, whatever. But I think I'm going on too much. Salim, rein yourself back in. Let's continue with this song. That's Nadir's fault, bro. Seriously, he does that to me every single time I listen to his music. जो हकता है वो ये निकलता है पखाना ये फैंस को खिलाते दिखाते मॉडल नंगी आदि फिर हवस वालों के व्यूज पे इतरा के कमा के गंद कहते कामयाबी अगर कोई सच झूठों को चका दे चिल्लाते टुपाक ने सब ये किया नहीं बड़ा तो हम सबको आया है अगर कोई सच exactly that, where झूठों को चका दे चिल्लाते yeah, चिल्लाते टुपाक ने सब ये किया है. Okay, again, we're back to that same thing. Tupac might have done whatever he did, right? But there's a few things that, there are basic foundational differences between, if we're talking, let's talk about the listener base that he's referring to, or as Pakistani, So if you look at it that way, then the way Tupac lived his life, or what he did, is from a base foundational level, is incompatible with how we should live our lives, how we should be as good people. Yes, it's been glamorized. Yes, it's been like, he got murdered and then they all took off and then everybody. But yeah,
listen to the music, learn from the music, whatever you want, but don't make the music, everything. That what happens or what happened or what a certain person did, I got to do that. I got to do that. I got to do that. Yeah, I got to say, I'm pretty certain that people my age, it doesn't affect them at all. But the younger lot, I can see how it would. And Salim, stop talking, man. You're going on again. Seriously, you said you're not going to do that, and you are. पाक ने सब ये किया नहीं बड़ा तो हम सबको आया है सिखाने छोड़ दे रैप मुसलमान तो इतना ही मुनाफिक है हराम है मौसीकी हराम ये हलाल वो हलाल ये हराम वो एक सफा भी तर्जुमा का पढ़ाने चलाएं ज़बान वो गूगल से छापे हदीसें दे लेक्चर इनके बस काम man, I'll get people like that all the time, man. Seriously, Google for, against, whatever you want to say. I don't know, man. That's so true. Subhana Rabbi Allah. It's not even with the basic grasp of the language. You know what it means, and you will find people who do not know what that means. It is so true. ठीक है शोभा हराम मेरा समझ लो फिर मोहम्मद अली मैं ये मौसीकी रैप छीन लूंगा इदली से मुनाफिकत से मोहब्बत करी मैंने इल्यूमिनाटियां फितना मैं कभी से की रैप छीन लूं ठीक है शोभा हराम मेरा समझ लो फिर मोहम्मद Yeah, समझ लो फिर मोहम्मद अली, the boxer, again, same kind of thing if you think about it, बदली मैं ये मौसीकी रैप छीन लूंगा इदली से मुनाफिकत से मोहब्बत करी मैंने इल्यूमिनाटियां फितना मैं कभी कभी मुझसे तो दज्जाल मिलने आता है सवाल मेरा तुझसे अगर मैं मुनाफिक तो तू क्या इधर अपनी माँ देने आया है Oh, चलते damn, bro. If I'm a hypocrite, then that's a bit like, wow. So true. So true, 100% so true, though. मैंने इल्यूमिनाटियां फितना मैं कभी कभी मुझसे तो दज्जाल मिलने आता है सवाल मेरा तुझसे अगर मैं मुनाफिक तो तू क्या इधर अपनी माँ देने आया है Again, even this comes back to that mirror, looking in the mirror and ignoring what you see, or seeing something completely different because it suits you better. चल तेरे मुताबिक मान लिया कलाकारी में होती कोई हद नहीं फिर कुत्ते की नस्ल भौंक के क्यों तू के रैप्स में लाते मजहब नहीं सब नहीं रिलेट कर पा रहे ये तेरे रैप गाने से जैसे मैं मर रहा हूँ सबको सुनाने में करे रिलेट नहीं तो मैं क्या करूँ भाई अगर इनके दिलों में रब नहीं जबान मेरी गुस्से में चले तो कभी कभार मैं भी कर लेता हूँ बदतमीजी फिर मौत की भी परवाह नहीं होती जैसे मैं कोई बहादुर सा फलस्तीनी बादल का कातिल मैं झूठों में शामिल नहीं कुर्बानी कर दी इस जिंदगी की दुआ करना नादिर मशहूर ना हो जाए तबाही कर देगा ये इंडस्ट्री की बनाता रहूंगा शाहकार फिर गधों को डिस करूंगा बार बार ताकि जब मैं रब के लौटूंगा दरबार डिस्कोग्राफी से भी करूंगा मारधार ये हार जीत वाला सीन नहीं है समझेंगे कैसे चढ़ी इनकी एनसी करेंगे ये गायब करियर दफा उसका जिसने खराब कर दी इनकी लेगेसी जब मैं बोलूं तो चरसी दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है जब नेपोटिज्म भी बरखूले Okay, all right. दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है now? This is because of the historical to and fro that's been going on in the past, but he's done it though, hasn't it? He'll say that and automatically, yeah, you know exactly what he's talking about, you know exactly what name pops into your mind, even if you don't want it to. It just happens because that vision has been kind of like implanted in a way. That truth, that fact has been kind of ingrained. But again, once again, some people like myself, they will see it for what it is and say, okay, it's a fact. And other people, what the hell are you talking about, bro? That's bullshit. लगता है जैसे कोई बच्चा गा रहा है करो मशहूर मेरे दुश्मनों को मेरा ज़मीर खुद भी यही चाह रहा है देख कैसे गंद दिखाए बगैर फीड पे तेरी मेरा कमाल का अमार है ये सिंगर्स और वाना बी रैपर्स तो पहला कदम मेरी पहली सीढ़ी है आगे मॉडल्स और एक्टर्स पॉलिटिशियंस बुशन कुमार टी सीरीज है इंडस्ट्री ये पूरी हकीकत बदल के सजा के गुनाहों को जीती है डिस करने की वजह मेरी सीधी है क्योंकि इन सारों के काम इब्लीसियां देखें आशिकी बच्चे मूवीज में शादी से पहले बने जोड़े फिर दुखी गाने डिप्रेशन से भरे बना के टूटे दिलों को ये तोड़े कुछ भी नहीं कर सकता नादिर जितना भी मचा ले तो रो ले तो मैं कुछ करना भी नहीं चाहता मैं तो मजा लूं बस इश्क हकीकी का होके Hey, come on, मैं तो बस मजा लूं इश्क हकीकी का होके. Come on, G. चाले तो रो ले तो मैं कुछ करना भी नहीं चाहता मैं तो मजा लूं बस इश्क हकीकी का होके. Wow. Wow, people, wow. Nadir, CHEN, K, Nazriya and Nadir
What a song. जिन लोगों ने इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी थी, थैंक यू वेरी मच. आई हैव डन इट. आई वाज गोना डू इट. चैन कही कि जहाँ तक बात है ना कि एक बंदा बता देना कि ये चीज़ रिलीज़ हुई है, तो मैंने वो कोशिश होती है कि सुननी है. कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है वगैरह. एनीवे, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग नजरिया एंड नादिर, बहुत रोका है मैंने इस गाने के दौरान, इसलिए आई थिंक कोई ख़ास इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है. शायद जो मैंने कह रहा था गाने के दौरान ही कह चुका हूँ. एंड आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि काफ़ी आप लोगों में से सुनने वाले तंग भी पड़ चुके होंगे कि यार क्या मजाक इसने बनाई हुई है, हर चंद सेकंड के बाद रोके जा रहे हैं. लेकिन ये नादिर का गाना है, चनके का गाना है. यू नो, he has that effect on you, on the listeners. His lyrics are so good, so powerful, hard hitting, truths. I'm glad to listen to it. Seriously, this guy, come on, man. This was released a year and a half ago. I don't know if he's released anything since then, but yeah, what a song. Powerful, in your face, honest, brutal, exactly what it says on the tin, exactly what you would expect from Chen K, and I love him for that. Absolutely awesome. I will leave a link to the song in the description. Make sure you follow that link and show the original artist your support. It is very important that you do that. And as always, if you like this video, give it a thumbs up. If you like the channel, please subscribe, hit the bell. Mad love if you do, no worries if you don't. What a tune. I'm going to be listening to this a lot. In fact, this is one of those songs that's going to get shared a lot as well by myself. And I totally understand why there was this persistence, whatever, for me to get to this and listen to this. And like I said, 4-5 हफ्ते पहले की रिक्वेस्ट आई है इस गाने की, लेकिन वो थोड़ा सा, my channel's been dead for a year and a half, nothing's been happening. कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा चैनल हरकत में आए, तो इस कोशिश में थोड़ी देर हो गई. But anyway, people, make sure you stay safe, be blessed. Inshallah, we'll catch you in the next video. But from me until then, take it easy. Allah Hafiz.